2 of the Sandhan Valley series. Actually, अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो just check the description on the top. I'll be posting the link. In the part 1 you'll be actually seeing the journey from Mumbai to Sandhan Valley, and in the part 2 you'll be actually seeing the valley. So जैसा कि मैंने part 1 में already बताया, we have just started our trek from the base. यहाँ पे पब्लिक ने बताया कि 15-20 minutes के वॉक के बाद we would be probably reaching the valley, and वहाँ पे जाने के बाद we'll be able to see what exactly we can do there. क्योंकि I've heard कि वहाँ पे activities भी होती है like rappelling and all. So not sure COVID के बाद if they have resumed the operations again. Let's see, अब वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा. So stay tuned. So guys, the game plan of today would be, जहाँ तक मैंने कहा था कि there would be some activities going on over here, and यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि there are two things which would be happening. One would be rappelling, जो कि माउंटेन के ऊपर से नीचे अपने को रैपल होके नीचे उतरना रहेगा, and जो second जो है भी zip lining, wherein they have a rope from one point of the mountain to the other point of the mountain, which you can see at that point. So the plan would be I'll be climbing over this mountain. वहाँ से rappelling होके नीचे जाएंगे, फिर संधन वैली से होते हुए we will be going towards the end point, and in the middle we will also be able to see some waters, जहाँ से मतलब यहाँ तक का कुछ पानी है. So they are saying that कि वहाँ पे boat भी रहेंगी, तो boat के ज़रिए से हम लोग आगे जाएंगे, and then we'll be coming back. तो यहाँ से आगे जाने के बाद they would be tying me with a rope, and उसके support से I would be getting down the mountain. ये चीज़ मैंने पहले कभी करी नहीं है, so this is gonna be the first experience for me. And महेश, उसको ये चीज़ करनी नहीं थी, उसको I guess इन सब चीज़ों से काफ़ी डर लगता है. So I'd be doing this alone, and he's standing at the bottom. So यहाँ से होते हुए I'll meet him. सो म्हणजे तुम्ही ह्याच्या अलावा अजून इकडे कॅम्पिंग पण होते की काय? हो, इथं कॅम्पिंग होते, ट्रेकिंग होते, हां, आणि रॅपलिंग पण होते. आणि हां हां, सांदन व्हॅली ही जगातली 2 नंबरची व्हॅली आहे. अच्छा अच्छा अच्छा, 2 नंबर जगात नाही ना, एशियामधली असेल. एशियामधली, हां हां, खंडातली हां 2 नंबरची व्हॅली आहे. हां हां हां. तर इथं पावसाळ्यात तर खूप गर्दी असते, हां हां. आणि नॅचरल खूप पाणी वगैरे असं. म्हणजे लॉकडाऊनच्या नंतर आता कधी उघडलं हे सगळं? लॉकडाऊन झाल्यावर लगेच ओपन झाल्यावर लगेच. अच्छा 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 अच्छा. सो गाइज, दिस इज द टॉप. यहाँ से रैपल करते हुए विल बी गोइंग डाउन. आई शो यू. वन नाही ना तुझं भेटेला? आहे ना, जाऊ शकतो ना? हो, नाही नाही. ऑलराइट, सो गाइज, ऑल गेअर्ड अप. अभी नीचे जाना है. जस्ट द क्वेश्चन इज, ह्याचं काय करणार मी? हे कसं घेऊन जाऊ? हां, असं गोल असं नका फिरो, हां असं असं. ऑलराइट, सो ऑलरेडी इस साइड. नहीं जाऊंगा भाई, मैं फटेगी तब भी जाऊंगा, पर जाऊंगा नक्की. करतो देखो, अरे ग्लोव्स नहीं दिया उनको.
क्या पैर में डिस्टेंस पैर में डिस्टेंस पैर में अंदर रखो भाई पैर में गैप रखो हाँ 1 मिनट रुक जाओ पूरा वेट पीछे डालो चलो थोड़ा पैर लो नीचे पैर में डिस्टेंस गैप रखो छोड़ो भाई छोड़ो इंदा छोड़ो सिमाई से जा नीचे कमरेच्या पाठी घे कमरेच्या पाठी हां मस्त अंतर ठेवा पाय अंतर ठेवा हां ओके अभी जंप कर लो अभी जंप कर लो थोड़ी हाँ पकडायलाच मला जागा झालं मी आटकून धरलं तुम्हाला पाण्यात जाते ना हां ग्लास काढू जाऊ दे सोडतो So guys, just rappelling करके हो गया and I came above again क्योंकि महेश ऊपर था and I had to go pick him up again. So I found him and now I'm going back again. And now the thing would be I'll be going towards the end point of Sandhan Valley, which is the extreme end of this. So not sure what to find there. People are saying कि पानी वानी है वहाँ पे and saying that we'll have to get a boat to pass. So yeah, let's see. Learn from the experts. ऐसे ही बोलते बोलते मैं गिर गया ना, पछके हो जाएंगे कैमरे में. Alright, so this is a place wherein we would be taking a boat. So यहाँ पे up until your chest it has water, but we wouldn't be doing that. We would be taking this boat, which you can see, जहाँ पे महेश खड़ा है. So yeah, so they are charging 50 rupees per person. जहाँ से जिस पे वो लोग यहाँ से वहाँ तक उस पॉइंट तक लेके जाएंगे and उस पॉइंट से they will be getting us back again. So guys, वो बोट से हम लोग इस पार आए. अभी संदन वैली नीचे 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 जाएगी and I guess we will be reaching the end point. A little scary because कोई है नहीं यहाँ पे and it's just me and Mahesh. जो ही पब्लिक थी वो एक्चुअली इस टाइम पे ऊपर जा रही है, मतलब वापस से रिटर्न जा रही है and हम लोग नीचे जा रहे हैं. So yeah, quite a thrilling experience it is. One hell of a journey.
Now guys, the thing is, मुझे पानी दिख रहा है, मैं यहाँ से वापस जाने की सोच रहा था, just because यहाँ पे कोई है नहीं, and we did not know the depth of the waters, so and महेश का भी mood off था, so I was thinking not to go ahead, but बंदा आगे चले गया अकेले, and there is, and I think I'll have to again go, so it looks like हम लोग end point देख के रहेंगे. Here we go. All right. So last वाला जो पानी था वो हम लोग ने क्रॉस कर दिया, and now we are actually going towards the end point wherein ये जो दोनों भी closing है वो खुल जाती है and we get to see the openings. So all thanks to Mahesh. Mahesh, thank you bro. उस बंदे की वजह से I'm able to complete this. So again we are stuck. यहाँ पे एक थोड़ा सा गहरा रास्ता है which you can see, जो कैमरे में शायद तक डीप नहीं लग रहा है but it's actually deep, and वो है end point जहाँ पे you can see the sunshine. So we are just deciding, so let's see. क्या करे जाओ यार, चला. Struggling to get down. ओहो भाई आ गए ले, भाई की हेल्प करेगा भाई. Thank you. No problem bro, anytime. You saved my life, I saved your life. But when did you save my life? In dreams. चलो. Sweet dreams are made of these. लेके जा. हाँ. पूरा दिन खेला. Mountain के top पे खेला. खेलेगा because I like it from my inner side. मैं This is Mahesh crying. हाँ. आगे बोल. I'm not saying. So guys, what you see in front of me looks like it is the end point now, जहाँ पे ये दोनों ओपनिंग्स जो है खुल जाती है संदन वैली की. ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो एंड होने का टाइम आ गया. सो मेरे पीछे जो आप प्लेस देख रहे हो दैट्स द एंड पॉइंट. नीचे जा सकते हैं एंड अभी 4 बज रहे हैं, एंड अगर नीचे गए तो वी वोंट बी एबल टू कम बैक बिफोर द डार्क. तो अंधेरे होने से पहले हमें वापस आना था. सो या, सो नाउ वी वुड बी क्लाइंबिंग अगेन अपवर्ड्स, सेम रूट, एंड फिर वहाँ से बाइक से फिर बाहर, फिर कुछ खाएंगे एंड फिर वी विल बी लीविंग. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, एंड अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, एंड मेक श्योर यू डू डिसलाइक ट्वाइस. 2 बार डिसलाइक का बटन दबाना, ताकि जस्ट टू बी श्योर. एंड या, दैट्स इट. एंड अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब. या ऑलराइट, अभी हम लोग आधे रास्ते में भी नहीं आए, एंड नाउ देयर इज़ वाटर विच वी हैव टू गो थ्रू. सो फर्स्ट वाटर, फिर देन आई गेस स्मॉलर वाटर, फिर आधे रास्ते से हमें वापस जाना रहेगा पानी में. ये जो हम लोग ने बोट की थी, दैट बोट गाय विल पिक अस अप and get to the exit. फिर वहाँ से maybe 15-20 नहीं, half an hour चल के we'll reach the base again. So, yeah.